So this is the continuation of straight line in space part 2. Today I will be teaching you about, now you already know how to frame an equation of a line. If two points are given, if one point and direction is given, then also you know how to find it out. You have learned about collinearity of all 3 points. I have taught you everything. So today I will be teaching you about how to find out, to determine. I will be teaching you to determine the angle between two lines. Angle between two lines. Okay, hash two strong. So suppose two lines are given. One is R1 is equals to A1 plus lambda into direction 1. मतलब line equals to इस format में अगर दिया है, first I am teaching in vector form. So this is my vector form. Then I will teach you in Cartesian form also. Okay, I will be teaching you Cartesian form here. Cartesian form. Both forms I will teach you. So another line is given R2. That will be how much? A2 plus mu into dr2. ऐसा है वेक्टर फॉर्म में. ये पॉइंट होता है आपका, ये डायरेक्शन होता है. कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? x minus x1 पॉइंट by a1 is equals to y minus y1 by b1 is equals to z minus z1 by c1 is equals to lambda. This one is line number 1 and line 2 कैसा हो जाएगा? x minus x2 अलग पॉइंट by a2 is equals to y minus y2 by b2 is equals to z minus z2 by c2 is equals to क्या हो जाएगा? mu. So this is the format of writing. Okay. अब थोड़ा सा तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि a1 a2 क्यों दे दिए, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा कैपिटल ले लेता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो. ये अलग है, ये वेक्टर में है a1. अब इन दोनों को रिलेट करने के लिए जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज माय a1 वेक्टर. पॉइंट्स क्या क्या हैं? x1 y1 z1 इज माय पॉइंट. सो x1 i कैप. पहला वीडियो में देख के ये समझ नहीं पाओगे, सो वॉच द पार्ट 1 देन वॉच दिस देन यू कैन अंडरस्टैंड. एंड dr डायरेक्शन विल बी व्हाट? नीचे जो होता है वो डायरेक्शन होता है. तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना. सिमिलरली पॉइंट a2 क्या है यहाँ पे? x2 y2 z2. तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, है ना. एंड dr2 विल बी हाउ मच? a2 नीचे में जो है वो डायरेक्शन होता है, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप. ठीक. Now you understood what is vector in Cartesian form, almost idea हो गया होगा. तो हमें मतलब डायरेक्शन चाहिए. Suppose two lines are like this. This one is an L1, this one is an L2. So the angle, to determine the angle between the two, हम लोग को दोनों का डायरेक्शन पता है. Line 1 direction is dr1, line 2 direction is dr2. याद करो थोड़ा क्लास 11 का फिजिक्स, बहुत सिंपल है. dr1 dot dr2 is equals to direction 1 का mod direction 2 का mod cos थीटा. कुछ याद आ रहा है? a dot b is equals to ab cos theta. It was to determine the angle between two vectors. सेम चीज यहाँ हो रहा है. सो हम लोग को क्या चाहिए? cos theta. तो cos theta is what? dr1 dot dr2 by dr1 का mod dr2 का mod. Very simple. This is how you find out. फिर थीटा क्या कर दोगे? थीटा is equals to cos inverse of that. बहुत सारे जगह में ऐसा भी लिखा था, cos inverse of ये जो आया हम लोग का dr1 dot dr2 dot product by dr1 mod dr2 mod. थोड़ा सा अगर यहाँ पे कार्टेशियन में स्पेसिफाई करवा देंगे तो थीटा विल बिकम व्हाट? cos इनवर्स dr1 dot dr2. dr1 था क्या चीज देख लो जरा. a1 b1 c1. यहाँ पे dr1 dot dr2 करें तो a1 a2 b1 b2 c1 c2. it will become what? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by mod of dr1. mod of dr1 करेंगे तो a1 square plus b1 square plus c1 square का रूट. तो देखो व्हाट? a1 square plus b1 square plus c1 square का रूट. एंड इधर का क्या हो जाएगा? a2 square b2 square plus c2 square का रूट. अंडरस्टूड? in both the formats how to find out the angle? writing format. Now two things are very important. First is case 1, perpendicular condition. कब बोलोगे? perpendicular condition. For perpendicular condition you know cos 90 it should be 0, so the dot product should be 0. अगर सोचो cos 90 0 हो रहा है तो 0 into dr1 dr2 कर दोगे तो क्या होगा? dr1 dot dr2 should be equals to 0. So this is the condition of perpendicularity. And case 2 is condition for parallelism. Parallel condition. What is the parallel condition? Parallel condition में हमेशा बोलते हैं the ratio should be
dr1 जो है it should be lambda of dr2. lambda क्यों, कुछ अलग ही ले लो, k times of dr2. सपोज dr1 जो भी दिया हुआ है, if it is k times, सपोज मान लो dr2 is i cap plus j cap plus k cap and dr1 है 2i cap plus 2j cap plus 2k cap. तो 2 कॉमन लेने से कौन आ जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 times of dr2 पूरा ही नहीं. So that is the condition of parallel. कार्टेशियन में बेटर समझ में आएगा. Here also I will take again case 1 perpendicular. तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर कंडीशन, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली पता है अगर cos थीटा करेंगे तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0. dr1 डॉट dr2 क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2. सो इट विल बिकम व्हाट, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equals to 0. and case 2 parallel. पैरेलल कंडीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेशियो सेम होना चाहिए. तो a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 is equals to lambda, है ना. So this condition should be equal. Am I clear to everyone? So these are the conditions and how we have to find out the angle. Okay, now the different variety of questions I will explain in further. So let's take the first question. What is the question, kindly read it. Find, I will be teaching you 4 types of question which will be coming in this chapter. So first type is find the angle. बहुत basic, बहुत direct है, जो पढ़ा है उसका direct question. Find the angle between the lines these two. Line 1 line 2 दिया हुआ है, but सबसे पहला चीज जो फॉर्मेट में लाना होता है हम लोग को, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था how to bring lines in format. These are not in format actually. So पहला लाइन को लाते हैं फॉर्मेट में. x minus 2 by 3 है is equals to y plus 1 by minus 2 है. ये 2 को इस तरफ लाएंगे बिकॉज़ z equals to 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, z minus 2. z minus 2 नीचे में कुछ नहीं है तो क्या 1 है और फिर इसको इक्वल करेंगे. z equals to 2 अगर दिया तो अगर आप 2 को इधर लाओ तो z minus 2, नीचे में तो कुछ है नहीं तो 1 है. ओके, इज इक्वल्स टू लाइक दिस. एंड इसको हम लोग को ले लेना है लैम्डा. ले लो ऐसे. x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, परफेक्ट. y का कोएफिशिएंट भी 1 है, परफेक्ट. z का कोएफिशिएंट भी 1 है, परफेक्ट. सो इसका डायरेक्शन व्हाट विल बी द डायरेक्शन 1, 3 minus 2 and 1 डिनोमिनेटर्स आर द डायरेक्शन अगर फॉर्मेट में है तो. एंड ऊपर वाली पॉइंट्स ये सब पॉइंट्स होती हैं. सो दिस इज 3i cap minus 2j plus k cap. ठीक. सेकंड लाइन आई हैव टू ब्रिंग इट इन फॉर्मेट और नॉट, लेट मी चेक. x माइनस क्या दिया हुआ है 1 by 2, 2y plus 3 है. 2y plus 3 मतलब y क्या आएगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो नहीं है तो लेट मी टेक 2 कॉमन. सो y plus 3 by 2 हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया ना हमने 2 by 3. ये सही है, z plus 5 by 2. तो फिर वापस लिखेंगे x minus, वापस लिखना पड़ेगा x minus 1 by 2 is equals to this 2 has to be brought to denominator, y plus 3 by 2. This 2 will come down means it will become what, 3 by 2 is equals to z plus 5 by 2. Now what is my direction number 2? dr2 is nothing but denominator देख लो फॉर्मेट में आने के बाद 2i cap plus 3 by 2 j cap plus 2k cap plus 2k cap. Okay, now I got both the directions. Now it has asked you to find out the angle. Very simple, सबको पता है cos theta is equals to क्या है, dr1 dot dr2 by dr1 का mod and dr2 का mod. So let me do it. Cos theta equals to multiply कर दो 3 into 2 6 plus minus 2 into 3 by 2 plus क्या था 1 into 2 by, इसमें mod लगाते हैं जरूर because to get an acute angle, root over of dr1 means what, 3 square plus minus 2 square. बहुत लोग यहाँ माइनस डाल देते हो, प्लीज मत करना वो, plus 1 square because all three are added. ठीक है ना. next one is 2 square plus 3 by 2 square plus 2 square. Okay, so here cos theta is equals to 6, 2 2 are cancelled out, minus 3 plus 2 by how much it is becoming 9. 9 plus 4 is how much, 13. 13 plus 1 14. 4 plus 9 by 4 plus 4. So 6 plus 2 8. 8 minus 3 is how much, 5 by root 14. ये कर लो जरा सॉल्व. 8 और 32 32 41. It is becoming how much, 41 by 2. 16 16 32 32 plus this is how 41 root 4 कितना हो जाएगा 2 2 will go out.
So cos theta is equals to 10 by root 14 root 41. So angle is what? Theta equals to cos inverse 10 by root 14 root 41. Okay, so this is my answer. Simple. So now this is the type 2 question, very silly question. Find the equation of a line parallel to a given line. इसके साथ भाई parallel होना चाहिए and passes through a point this. तो इसके साथ parallel होना चाहिए. So first what is given to me? Given में लेते हैं. Parallel means what? I plus j plus lambda into 2i plus j minus 2k. It is parallel. So तुम्हें पता है ये point होता है and this one is what? Direction. So parallel means the direction should be almost same. Okay. So the direction can be taken because इसके साथ parallel है वो line. So the direction will be same as parallel. So direction will be same. So direction will be how much? 2i plus j minus 2k. ठीक. And it is given passes through a point this. तो passes through point भी मिल गया हम लोग को. Passes through point is how much? 2 minus 1 and 3. So very easy to write in vector form. तो पहले vector form में मैं लिख देता हूँ. So the vector form is what? R is equals to point plus lambda into direction of the point क्या है? 2 minus 1 3. So this is 2i minus j plus 3k plus lambda नहीं यूज कर सकते, वहाँ यूज हो चुका है, तो mu into the direction जो दिया हुआ. बहुत easy है क्वेश्चन. या तो I can write in Cartesian form also. What will be the Cartesian form? X minus point by direction. तो x minus point कौन सा है? 2. by direction कौन सा है? 2. is equals to y minus point. point क्या? -1. तो minus और -1 क्या हो जाएगा? +1 by direction is how much? 1. is equals to z minus point. z minus 3 by direction is how much? -2. is equals to mu. Okay. So this is my Cartesian form. So this is the type 3 of question. Okay, ये भी बहुत आसान है. जो फिजिक्स पढ़े हुए 11th में उनके लिए बहुत इजी, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा समझ लो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. वापस तुम्हें पॉइंट दे दिए एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस क्या है? x by 1 equals to y by 2 equals to z by 3 and x plus 2 by -3 is equals to y minus 1 by 2 is equals to z plus 1 by 5. ये दोनों लाइन के साथ परपेंडिकुलर है. सबसे पहली बात तो पहला बात इस लाइन का डायरेक्शन लिख देते हैं dr1. क्या होगा उसका डायरेक्शन? x का कोएफिशिएंट परफेक्ट है, y का भी 1 है, z का भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 1 2 3 ले सकते हैं. तो 1 माने i क्या? 1 into i क्या? 2j क्या? plus 3k क्या? and what is the direction number 2? ये भी फॉर्मेट में x का कोएफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, तो कुछ मॉडिफाई करने का जरूरत नहीं. दिस इज व्हाट? -3y का plus 2j क्या plus 5k क्या? इजी. दोनों का डायरेक्शन मिला हुआ है, बट इट इज सेड perpendicular to both these lines. If something is perpendicular to two lines, तो जो तीसरे लाइन का डायरेक्शन होगा, the direction required, this is my required direction, क्योंकि दोनों से perpendicular है ना. So what can I do? That is cross product of both. अगर मैं कभी भी तुम्हें बोलता हूँ कोई भी दो वेक्टर का perpendicular निकालना है, कैसा होता है? A पता है हमें, डायरेक्शन 1 पता है, डायरेक्शन 2 पता है, तो डायरेक्शन 1 क्रॉस डायरेक्शन 2. The thumb is my answer. You can see ना. Suppose this is my direction 1, this is my direction 2. तो direction 1 cross direction 2, मतलब उंगलियों को रोल करो. The thumb gives you the answer. See, the thumb is perpendicular to direction 1 also दिख रहा है. See, 90 degree L, and the thumb is perpendicular to direction 2 also. I am rolling from direction 1 to 2 and I am getting my answer like this. So it is perpendicular to both the direction. यहाँ पे दिया भी वही है, perpendicular to both the lines. So my answer direction is, कभी भी बोला होगा find a direction which is perpendicular to two vectors. What do you need to do? Cross product. क्या करना है हम लोग को? क्रॉस प्रोडक्ट करना है. दिस एक्सप्लेनेशन इज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट बिकॉज़ साइंस स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू डू क्रॉस प्रोडक्ट. सो हाउ डू वी राइट? i j k. dr1 में क्या क्या है? 1 2 3 एंड dr2 में कौन है? -3 2 and 5. सो हाउ कैन आई राइट? i को रखेंगे, i वाले लाइंस को छोड़ देना, इसको छोड़ देना और इसको छोड़ देना, तो बचेगा क्या? 2 3 2 5. पहला वाला i जो होता है प्लस i होता है पॉजिटिव, सेकंड में j आएगा तो माइनस j विल टेक. ओके, j वाले लाइंस को छोड़ दो, j इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो बचा कौन? 1 3 -3 5. फिर वापस से प्लस फिर माइनस फिर अगेन प्लस, तो प्लस k. ओके,
k वाले लाइंस को छोड़ देना, तो बचेगा क्या 1 2 -3 2. Okay, so now this will become equals to dr is equals to I तो था ही plus I would be there. कैसे लिखते हैं देखो, this into this minus this into this, तो 2 into 5 is how much 10 minus 2 into 3 10 minus 6. डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, फिर देखो माइनस j लिख देना, वापस सेम तरीका, this into this minus this into this, this into this is how much 1 into 5 is 5 minus minus 3 into 3 is minus 9, 5 minus or minus 9. After that plus k, 1 into 2 is how much 2 minus minus 3 into 2 is how much minus 6, so minus or minus 6. So this dr is equals to 10 minus 6 is how much 4 I cap, 5 plus 9 हो जाएगा, minus or minus plus 9, this is 14, तो minus 14 j cap and 2 plus 6 8 plus 8 k cap. I got my direction and point तो हमें दिया ही था, तो point was how much -1, 3, 2. Now what is the vector form में क्या हो जाएगा required, जो मेरा आंसर है. इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है पॉइंट प्लस लैम्डा की डायरेक्शन, पॉइंट पहले लिख दो माइनस आई क्या प्लस 3j प्लस 2k, पॉइंट हो गया, प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन क्या है 4i माइनस 14j प्लस 8k, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है. दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. एंड इफ आई नीड इन कार्टेशियन, वापस x माइनस पॉइंट क्या है -1, तो x माइनस और -1 मींस +1, बाय डायरेक्शन इज 4 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 y माइनस पॉइंट बाय डायरेक्शन इज हाउ मच -14 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 बाय पॉइंट इज डायरेक्शन इज 8 इज इक्वल्स टू लैम्डा. दिस इज माय कार्टेशियन फॉर्म. इजी. Now this is a type 4 of the question, and with this the point 2 of the exercise will be complete. You can solve all kind of questions of point 2. Okay, so what is the question? Let us read it. Find the value of lambda so that the lines 1 minus x by 3, 7y minus 14 by 2 lambda and z minus 3 by 2. देखो मेरे 2 और z में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा देख लो भाई, ये z है, ये 2 को थोड़ा मैं डाउन से लिख देता हूं. ओके, 7 minus 7x by 3 lambda, y minus 5 by 1, 6 minus z है ये, गलती कंफ्यूज मत होना भाई, this is z by 5. Okay, so first of all I have to bring it in format. I have to prove they are in, मतलब दिया हुआ है are at right angle, it is given they are at right angle and I have to find out the value of lambda. Right angle का कंडीशन भी पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन शुड बी 0. पहले फॉर्मेट में तो लिखते हैं 1 minus x, x के सामने क्या होना चाहिए पॉजिटिव 1, x के सामने तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x minus 1, माइनस कॉमन लेंगे तो x minus 1 हो जाएगा by 3. 7y minus 14, y क्या क्या होना चाहिए 1, तो क्या कॉमन लूंगा 7, तो यहाँ y 14 में से 7 कॉमन गया तो 2 by 2 lambda is equals to z minus 3, z के आगे तो 1 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो z minus 3 by 2 ये फॉर्मेट में आ गया. अब वापस x minus 1 ये माइनस को नीचे लाएंगे, minus 3 is equals to 7 को नीचे लाएंगे, y minus 2 by 2 lambda by 7 कर देंगे तो 7 नीचे आ गया. This is z minus 3 by 2. Now everything is in format. Now my first direction will be how much? Minus 3i plus 2 lambda by 7 j cap plus 2 k cap. I got my direction. Now in this case 7 minus 7x, x क्या कि 1 होना चाहिए. What I will take common? I will take minus 7 common. क्या common लूँगा minus 7 ताकि वो हो जाए x. 7 में से -7 कॉमन लेने से क्या बचेगा -1. थोड़ा ध्यान से देखो यार, कॉमन लेना सीख लो. माइनस x का -7 है तो फिर -7 नहीं ले लिया आपने, x बचा 7 प्लस 7 से -7 लेंगे तो 7 में -1 बचा बाय 3 लैम्डा, y -5 by 1 फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं है. 6 minus z है, हम लोग को z -6 करना तो z क्या है 1 करने के लिए ऐड टी माइनस कॉमन, z -6 by 5. So what will happen now? X minus 1 by -7 should come below. So this will become what? -3 lambda by 7 is equals to y minus 5 by 1 is equals to z minus 6 by minus नीचे आ जाना चाहिए तो क्या होना चाहिए -5. So what will be my direction 2? -3 lambda by 7 I cap plus j cap minus 5 k cap.
So I got my direction 1 also, I got my direction 2 also. So now it is already given they are perpendicular, they are at right angles. Given they are at right angles, तो राइट एंगल्स में अगर है तो dr1 डॉट dr2 क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. तो कर लेते हैं. dr1 आया हुआ है -3 into -3, तो -3 into -3 lambda by 7 plus v1 v2, तो 2 lambda by 7 into 1, फिर k में क्या है +2 into -5 is equal to 0. So this becomes what, 9 lambda by 7 plus 2 lambda by 7 minus 10 is equals to 0. तो 9 plus 2 how much, 11 lambda by 7 minus 10 को आप उधर ले जाओ 10, तो lambda equals to 70 by 11. So this it has. Okay.